गांव के चारों तरफ की जमीन एक बार सरकार ने कर ली, गांव को बाउंड्री के अंदर बंद कर दिया गया। जीएमआर कंपनी को जो इन कांग्रेस के कुकर्मों के कारण उसको दे दी गई, वो जीएमआर कंपनी ने बाउंड्री कर दी। अब गांव के लोगों को वहां पर पैदल चलने के लिए, वॉकिंग करने के लिए जगह नहीं है। आजकल बीमारियां बढ़ रही हैं, लोग वॉक करना चाहते हैं, इसलिए उस जमीन को जो उन्होंने बाउंड्री कर ली है जीएमआर ने फालतू में, जबकि उनकी एक बाउंड्री अंदर है। उन्होंने कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में सेटिंग करके वो ऑर्डर करा लिया और वो आज लोग, गांव के लोग गुलामी की तरह जी रहे हैं। तो होनहार बच्चों के जीवन को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी इसकी चिंता करें कि जीएमआर के लोगों से कहें कि वॉक करने के लिए वहां पार्क की व्यवस्था वो उन लोगों के लिए जमीन को दी जाए। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष कुमार जी। सभापति महोदय, आपने मुझे नागर विमानन मंत्रालय के अधीन 2022-23 के डिमांड फॉर एवं ग्रांट पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महोदया, मैं सबसे पहले एयर इंडिया के निजीकरण के लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह संस्थान पिछले कई वर्षों से घाटे में था और साल दर साल सरकार के ऊपर पब्लिक मनी का बोझ पड़ता जा रहा था। आशा है कि टाटा एयरलाइंस ग्रुप के पास इसका सफल परिचालन हो सकेगा। वैसे तो मेरा मानना है कि सरकार के अधीन भी एक सरकारी विमान कंपनी होनी चाहिए। विकट परिस्थिति में सरकारी संस्थान द्वारा आम नागरिकों को सेवा प्रदान जिससे किया जा सके। महोदया, मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो उड़ान योजना में पूर्णिया का जो वायु सेवा बहाल करने के लिए सम्मिलित किया गया था, बिहार के पूर्णिया हवाई अड्डे से घरेलू उड़ान सेवा बहाल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 18/8/2015 को इसकी घोषणा की थी और पूर्णिया से हवाई सेवा बहाल करने के संदर्भ में टर्मिनल बिल्डिंग बनाने के लिए राज्य सरकार को जमीन देना था, जो 2017 में ही राज्य सरकार ने जिलाधिकारी को राशि आवंटित कर दिया था। लेकिन इस जमीन का अधिग्रहण होना था, उन किसानों ने हाईकोर्ट की शरण में चला गया था, जिसके वजह से वह जमीन का अधिग्रहण अभी तक नहीं हो पाया था। लेकिन कोविड महामारी के चलते हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही थी और अब हाल के दिनों में पीछे 9 मार्च को उच्च न्यायालय ने उस पूरे मामले को जिलाधिकारी को वापस कर दिया है और मुझे विश्वास है कि 15 अप्रैल तक जमीन का भी निपटान हो जाएगा और एयरपोर्ट अथॉरिटी को वह जमीन हस्तांतरित कर दी जाएगी। और माननीय मंत्री जी से हम उम्मीद करते हैं और माननीय मंत्री जी से भी लगातार हम संपर्क में हैं, कई बार मिल चुके हैं कि अप्रैल के महीने में जब जमीन हस्तांतरित हो जाए तो वहां पे टर्मिनल बिल्डिंग का काम प्रारंभ हो जाए और जो बीड में लाके पूर्णिया से वायु सेवा बहाल हो जाए। ये मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं और मुझे आशा ही ने विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इसको सकारात्मक रूप में लेके पूर्णिया से वायु सेवा बहाल करने का काम करेंगे। जबकि 2017 में हमारे पड़ोस में दरभंगा एयरपोर्ट को लिया गया, टेकअप किया गया और 20 में वह चालू हो गई और दरभंगा से काफी पैसेंजर मिल रहा है। जो हवाई, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज का सफर कर सके, वह साकार दरभंगा में हुआ है और दरभंगा से भी अधिक पैसेंजर पूर्णिया से मिलेगा, क्योंकि पूर्णिया के आजू बाजू में जो पूर्णिया प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल, बगल के पड़ोसी देश नेपाल, बंगाल का कुछ इलाका, वहां से भी पूर्णिया एयरपोर्ट में आएंगे लोग। वहां आसपास के जो पैसेंजर हैं वो पूर्णिया एयरपोर्ट से जहाज लेके अन्य जगह जाने का काम करेंगे। इसलिए मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इसमें सकारात्मक रूप से इस योजना को चालू कराने का काम 2023 में कराने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो बौद्ध सर्किट परियोजना के तहत सभी अंतर्राष्ट्रीय महत्व के बौद्ध सर्किट को जोड़ा, जिसमें कुशीनगर, सारनाथ को एयरपोर्ट कनेक्टिविटी तो मिला,
परंतु गया को पहले से था, लेकिन नालंदा उससे वंचित रह गया। नालंदा को भी जोड़ने का काम माननीय मंत्री जी करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से पुनः आग्रह करता हूं कि पूर्णिया में वायु सेवा बहाल 2022 के अंत में प्रारंभ हो जाए। वहां पे एयरपोर्ट का जो रनवे का काम था, जो वायुसेना के द्वारा निर्माण किया जा रहा था, वो भी ऑलमोस्ट पूरा होने पे है। इसलिए माननीय मंत्री जी, इस टर्मिनल बिल्डिंग जल्दी से बनवा दिया जाए, वहां से वायु सेवा बहाल कर दिया जाए, ताकि जो पिछड़ा इलाका है, वो जो एक्सेप्शनल इलाका है, वहां के लोगों को उसका लाभ मिल जाए। ये माननीय मंत्री जी से हम आग्रह करते हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि पूर्णिया को उन्होंने चयनित किया उड़ान सेवा योजना में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री पी रविंद्रनाथ। Thank you, Chairperson, Madam. Let me first of all thank this opportunity to thank our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, for launching the mission Operation Ganga and successfully evacuated our citizens stranded in the war-torn Ukraine. I also wish to extend my appreciation to our Honorable Minister for Civil Aviation, Sri Jyotiraditya Scindia ji, for personally leading the evacuation mission and brought back about 18,000 Indians. The success of this mission has satisfied India's growing influence in the global arena. Madam, the civil aviation sector in India has witnessed remarkable growth in the last few decades. Since 2014, the sector has been witnessing exceptional transformation both in terms of infrastructure as well as in the working environment. Madam, sir, studies shows that air connectivity has an economic multiplier of 3.1 and employment multiplier of 6.1. Our government has truly recognized the significance of aviation sector in the economic growth of the country, and airport is identified as one of the 7 engines that propel PM Gati Shakti. I welcome the initiative of Airport Authority of India to set up of 9 new flying training organizations in 5 new cities through a liberalist FTO policy. Sir, I wish to conclude, before concluding, by placing few requests through you, sir, with the Honorable Minister. With the objective of developing opportunities of aspiring pilots from our nation, I welcome the liberalist FTO policy introduced by the Airport Authority of India. I request that at least one flying training organization may be allotted for Tamil Nadu in the proximity of Madurai Airport in the southern Tamil Nadu. I also wish to propose that considering the anticipated demand for pilots in India in the near future, policies may be taken to ensure development of large chains of flying schools with the more number of training aircrafts than the dozens of small fragmented ones that are in any way not sustainable. I wish to suggest that leading airlines should come up with their own FTO so that with this backward integration, they can benefit in the long run. As Uttarist remote pilot training organization for drone training may be sanctioned in the proximity of Madurai Airport. It will not only enhance the prominence of Madurai Airport, but also provide base for the development of sustainable ecosystem for the aerospace research and development in the southern districts of Tamil Nadu. Sir, southern districts of Tamil Nadu is mostly dependent on agriculture, and the facilities to impart professional training for drones will help provide employment opportunities in drone operation, maintenance, design, manufacturing, and data analytics, etc. Depending on the courses successfully completed by them. Moreover, now that drones are being, only one speaker. Now that drones are being extensively used in several farming avenues, farmers will get cheaper and trained access in drone service. Sir,
I was fortunate to be a part of the recent Indian parliamentary delegation to UAE along with our Honorable Speaker Sri Om Birla ji. I had an opportunity to visit the Indian Pavilion in Dubai Expo 2020, where a startup incubated in IIT Chennai has displayed a futuristic two-seater eVTOL aircraft developed for civilian transport. Sir, when we have so much talent in our nation, I finish in within 2 minutes, sir. Please, in aviation field for our requirement, I wish to suggest aviation ministry should actively encourage promotion of startups in this sector, sir. Sir, I would recommend the Honorable Minister through you, sir, to consider introducing a policy to permit concessional air travel for senior citizens traveling for the medical purpose, sir. Please sir, conclude. I conclude in 1 minute, sir. Sir, I wish to suggest providing opportunities for local artisan farmers and craftsmen to promote and sell their products in the respective airports in the similar lines of one station, one Honorable product members, proposed by Railway Minister. And finally, Honorable members, only one, sir. please conclude. Sir, Your time is over. I finish it. With regard to the proposed second airport in Chennai, in Tamil Nadu, though land had been identified in the outskirts of Chennai, Yes. no further developments have taken place. Hence, I request Minister to kindly expedite the commencement of the airport without further delay, considering the ever-increasing passenger load Thank on you. the existing Chennai International Airport at Meedambak. Thank you so much. Honorable members, N.K. Premendra. Thank you very much, Mr. Chairperson, sir. Sir, I rise to oppose the demands for grants of civil aviation proposed by our learned friend, Sri Jyotiraditya Scindia ji, the Honorable Minister for Civil Aviation, for the financial year 2022-23, as the budget proposals for 22-23 are totally for the privatization of the civil aviation sector. Sir, indiscriminate, rampant privatization is taking place in the entire civil aviation sector, namely airlines, airports, cargo maintenance, repair and overhaul services, MRO, and general aviation, aerospace manufacturing, skill development. In all sectors, the privatization, rampant and indiscriminate privatization is taking place in almost all the areas of civil aviation. Therefore, I strongly oppose the policy of privatization and hence oppose the demands for grants for the civil aviation proposed by the Honorable Minister. Sir, the National Civil Aviation Policy, that is NCAP of 2016, that too mainly aims at rampant privatization, and further 100% FDI is also permitted in scheduled air transport service. So the entire scenario of the civil aviation sector now open to the private sector, and even to the FDI is being allowed. In such a situation, the role of the ministry, of an independent ministry of such kind itself, is in question. That is the first point which I would like to make. Sir, the only point which I would like to focus is on regarding the Air India. That is the sellout of Air India. The privatization or the sellout of Air India is very, very interesting if you examine. So the share purchase agreement was signed with Thales Private Limited, that is Tata Company Limited, on 25th of October 2021. The bid was won by rupees 18,000 crores as enterprises value EV. So why the prestigious national carrier of the country is sold out for cheaper price? So the privatization of Air India was a deliberate, systematic, scientific activity done in a phased manner with ulterior motive, with mala fide intention. It was killing of Air India because Air India was running in profit and it was running in a good way, but systematic and scientific killing of Air India was done, and finally it was forced to sell the Air India, such a prestigious national carrier of our country. Now, a country like India, the democratic country like India, which do not have a national carrier, means it is shameful as far as the nation is concerned. Sir, how the Air India is being killed, I would like to cite some examples. Sir, in violation of the bilateral agreements
traffic rights were given to foreign carriers, which was one major reason for the downfall of Air India. Domestic route schedules were withdrawn or cancelled to pave way for the flights of private airlines. And interest on aircraft purchase loans were paid at the rate of 9%, whereas now the new company Tata got the same reduced to 4.5%. That means less than half. That is, it was 9% when it was Air India, now it has come down to 4.5%. Corrupt officials were protected and no steps were initiated to put an end to corruption in Air India. The majority of routes operating to Gulf countries were handed over to Air India Express. Air India Express being low-cost carrier, executive class passengers, and passengers preferring full service carriers opted other airlines. Sir, government took no steps to control the mismanagement and corruption in Air India with the sole intention to sell the national carrier to private airlines. Sir, I would like to know from the Honorable Minister, what would be the future of the employees of Air India after 1 year? That is the question which we are all concerned. We know that Air India was forced to sell. Finally, it is sold. Though we are, in principle, we are opposing it. We would like to know what would be the fate of the employees of Air India. So the number one point is, post-disinvestment, Tata will be required to retain the employees of Air India in service for just 1 year. It is submitted that the denial of job security to the employees of Air India post-disinvestment is contrary to the service regulations and standing orders that are presently applicable to all the employees of Air India. As per the applicable services regulations and standing orders, they are entitled to continue in service until the age of 58 years, which is the age of superannuation. When airports were privatized, Airport Authority of India, there was an option. They can go to the other airports which comes under the Airport Authority of India. But as far as the Air India employees are concerned, they have no other option. So I would like to know from the Honorable Minister, when such an option was there for Airport Authority of India employees to have an option to other airports, why you are not giving any chance of deployment to any other public sector undertakings by which their job security can be protected. And the second point is, as per the guidelines of the Department of Public Enterprises, central public sector companies are supposed to bring out a voluntary retirement scheme prior to handing over the company to the new employer. Why in the case of Air India it is not done? No VRS scheme has been announced before handing over this company to a private airlines. And the third point is, the employees and retired, sir, I am concluding. The employees and retired employees are providing medical facility as a condition of service. Will Tata continue to provide the medical facilities to the employees and the retired employees? This has to be made assured. Since it is quite unfortunate that nothing is being done so far, so I am seeking the clarification. Sir, I would like to cite an example. You may be well aware regarding an honest officer, an honest employee of Air India. I am not mentioning his name. That is, he has a whistleblower. He has been harassed like anything by the Air India employees of the Trivandrum airport. And finally, against the Air India officers, the crime case has been registered by the police. That is, the general manager personal officiating Southern region and the manager Trivandrum are the 7th and the 9th accused respectively. What is the crime? In this crime case registered for forging and foisting false complaint of sexual harassment against an honest employee of Air India in Trivandrum. Justice should be provided to him. And the last point, sir, which I would like to make is regarding the budget proposals. Sir, if you see the budget proposals, Indian aviation sector is the 3rd biggest domestic aviation market worldwide and 9th largest international aviation market. But if you see the budget estimate for 22-23, 85% less than that of the revised estimate of 21-22. The capital expenditure is just 76 crores of rupees, while revenue is just 10,591 rupees. So the budget estimate of 22-23 shows that an independent ministry for civil aviation is not required, because the entire rights or the entire functions have already been transferred to the private sector. And the last point, sir, regarding the user fees. See, the Cochin International Airport Limited is a joint venture by the cooperative sector, joint venture company. In Cochin International Airport, it is running in profit and they are giving dividend to the shareholders. There is no use
user fees. But as far as the private airports, Delhi, Mumbai, Hyderabad, Bangalore are concerned, huge user fee is being imposed as far as the passengers is concerned. So kindly have some control, regulatory mechanism so as to regulate and monitor the user fee which is being imposed upon the poor passengers. With these words, once again, I would like to say that I would like to oppose the privatization policy, and with these words I conclude. Thank you very much, sir. Honorable Member Shrimati Navneeta Rana ji. अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारे मंत्री महोदय को और प्राइम मिनिस्टर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। जो वॉर यूक्रेन में हुआ और उस दौरान जो बच्चों के फोन जब उनके पेरेंट्स चिंतित होकर हमारे पास तक पहुंचते थे, तब हमारी सरकार ने उन्हें सेफली अपने देश तक वापस लाने का काम किया बिना उन्हें कुछ प्रॉब्लम हुए। तो पहले तो ये डिपार्टमेंट को, हमारे जितने मंत्री वहां गए थे सभी को दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगी। जिनके बच्चे मेडिकल एजुकेशन के लिए, जॉब्स के लिए या बिजनेस के लिए वहां पे गए थे, उनकी चिंता सिर्फ वही जानते थे और ये सरकार जानती थी, और वो चिंता देखते बराबर उन्होंने इम्प्लीमेंट करके उन बच्चों को यहाँ लाया। इसलिए ये हाउस में उसके ऊपर कुछ चर्चा नहीं हुई, क्योंकि अच्छा काम हुआ तो बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। अगर कहीं मिस्टेक हो जाती है तो पूरे हाउस में एक बवाला खड़ा हो जाता है। तो मुझे लगता है वो बच्चों की जान बचा के ये डिपार्टमेंट ने जो मिशन गंगा के अंतर्गत जो काम किया, उसके लिए हम सभी एज ए पेरेंट्स, उन बच्चों के नहीं पर एज ए पेरेंट्स होने के नाते हमें पता है कि बच्चों को सेफली अपने देश लाना इस स्थिति में बहुत जरूरी था और ये सरकार ने वो किया। इसके लिए मैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। सर, अध्यक्ष महोदय, अकोला हमारे विदर्भ का एक सबसे डेवलप सिटी हुआ करता था। विदर्भ में नागपुर के बाद अकोला की सबसे ज्यादा डेवलपमेंट थी, और वहां पर जब हवाई अड्डा 30 साल पहले बना था, कुछ कारणों के पीरियड में वो हवाई अड्डा को बंद किया गया और उसको जो जगह दी गई थी हमारे डॉक्टर पंजाबराव देशमुख एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लगभग 60 हेक्टर जमीन वो एयरपोर्ट को देकर एयरपोर्ट शुरू किया गया था, और कुछ कारणों के कारण शायद वो एयरपोर्ट बंद किया गया। आज अगर इमरजेंसी, सर कोविड के दौरान जब वहां पे इमरजेंसी लैंडिंग अगर वो एयरपोर्ट के करना, रनवे पे करना था, तो इमरजेंसी लैंडिंग भी नहीं कर सके, इतनी रनवे की पोजीशन खराब थी। तो मैं आपसे विनती करूंगी, नए एयरपोर्ट जो महाराष्ट्र में 2014 के बाद बने, उसके लिए तो अप्रिशिएबल है ही ये सरकार, पर जो एयरपोर्ट बंद हुए हैं और आज वो स्थिति में चल सकते हैं और अच्छा कवर कर सकते हैं, तो वो एयरपोर्ट पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं विनती करूंगी कि अकोला एयरपोर्ट को उसका रनवे डेवलपमेंट करके और एयरपोर्ट शुरू करवाया जाए, नहीं तो किसी प्राइवेट अथॉरिटी को देकर एटलीस्ट वो एयरपोर्ट की शुरुआत करके उस क्षेत्र के व्यापारियों को, स्टूडेंट्स को, सभी को ग्रोथ होने का एक मौका फिर से देना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, इमरजेंसी के लिए हमारे जो परतवाड़ा, हमारे अमरावती डिस्ट्रिक्ट में परतवाड़ा अचलपुर है, जहां पर ट्राइबल क्षेत्र लग के है। सर, बीच में हमारे यहाँ पे ऑर्गन डोनेट किया बहुत सारे लोगों ने। इमरजेंसी लैंडिंग अगर वहां पर हम लोग को हेलीपैड की आवश्यकता है, सर मैं आपको बताती हूँ, 2 ऐसे जीव जो एक्सीडेंट में गए तो उनके फैमिलीज ने ऑर्गन डोनेट किए, पर टाइम पे हम चेन्नई और पुणे नहीं पहुंचा सके करके हम कई लोगों की जान नहीं बचा पाए। तो अगर वहां पे परतवाड़ा अचलपुर में एक छोटा सा हेलीपैड अगर सुविधा हो जाए, क्योंकि ट्राइबल क्षेत्र को लग के है, तो बहुत सारी जानों को बचाने का काम वो क्षेत्र के अमरावती जिले के लोग और डॉक्टर्स कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा एप्रिसिएशन और सपोर्ट हो जाएगा तो मुझे लगता है लोगों की हम जान बचा पाएंगे। सर, हमारा हिल स्टेशन है, टूरिज्म के नाम से चिकलदारा मेलघाट जो टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, और स्काई वॉक वहाँ पे बन रहा है, तो देश का 3rd सिंगल रोपियो स्काई वॉक वहाँ बन रहा है। तो वहाँ पर आने वाले समय में ऑलमोस्ट वीकली के एंड में सैटरडे संडे को ऑलमोस्ट 10,000-15,000 लोगों का आना जाना वहाँ पे रहेगा, और वो हिली एरिया में है। अगर वहाँ पे छोटा सा, सर डिमांड्स थोड़ी ज्यादा है, पर मुझे लगता है केंद्र सरकार उसे पूर्ण करने की पूरी ताकत रखती है। तो उस क्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अगर हेलीपैड की आवश्यकता अगर वहाँ पे पूर्ण की जाए, तो मुझे लगता है हमारे क्षेत्र की, सर लास्ट 2-3 मिनट सर, only 1 minute, सर आई विल ऐड ऑन 1 more minute सर। सर, हमारे अमरावती में जिस तरीके से हमारे पूरे महाराष्ट्र में अभी हमारे
मंत्री जी ने पिछले 2014 से 7 वर्षों में जलगांव, नांदेड़, नासिक, शिरडी, कोल्हापुर, सिंधुदुर्गा और अभी रिसेंटली गोंदिया जाके हमारे मंत्री महोदय के हाथ से एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया। सर, हमारी अमरावती करों की बहुत बड़ी अपेक्षा है कि जो काम के लिए आपने 75 करोड़ रुपया हमारे एयरपोर्ट को अभी अलॉट किए गए हैं, उसमें से कुछ ही फंड सिर्फ हमारे राज्य को मिला है। तो अगर 31 मार्च होने से पहले अगर वो पूरा फंड हो जाता, सर, द डिपार्टमेंट हैज गिवन मी अ रीजन व्हेन आई आस्क्ड, आई जस्ट विजिटेड दैट एयरपोर्ट लास्ट 10-15 डेज बिफोर एंड व्हेन आई आस्क्ड द ऑफिसर्स कि ये स्थिति आज ऐसी की ऐसी क्यों है। पिछले 1 सालों से कारण दे रहे थे फंड नहीं है, पर जब केंद्र सरकार ने फंड दिया है तो इसका काम क्यों तेजी से शुरू नहीं किया है। गोंदिया हो गया है सर, पर अमरावती का काम अभी भी उसी स्टेबल पे है। तो मैं आपसे विनती करूंगी कि डिपार्टमेंट को एक आदेश देकर कि जल्द से जल्द इसका भी काम पूरा होकर और मंत्री महोदय के हाथ से हमारे अमरावती का भी एयरपोर्ट, हमारे अमरावती कर भी फ्लाइट से उड़ान भरें। जैसे बोलते हैं हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई में बैठे, वैसे हमारी अमरावती कर भी एयरपोर्ट में ट्रैवल फ्लाइट में करे, इतनी अपेक्षा मैं रखती हूँ सर। प्लीज कंक्लूड। So why you are doing like this, sir? प्लीज कंक्लूड। और मंत्री महोदय का और पूरे डिपार्टमेंट का और सभी मंत्रियों का ये डिपार्टमेंट के द्वारा, अभी हमारे एक भाई ने मुझे कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट में ट्रैवल करते करते जब अंदर से ट्रैवलिंग करते हैं तो अंदर पूरा कमर्शियल बन गया है, जिगजैग होके निकलना पड़ता है, वो पूरा कमर्शियली एयरपोर्ट बना दिया गया है। उसकी थोड़ी सी सुविधाएं की जाए, इतनी विनती मैं डिपार्टमेंट से करूंगी। और मंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री वी.के. श्रीगंडन। Start. Respected Speaker, sir, I thank you for allowing me to participate in the debate concerning the Ministry of Civil Aviation. The Uday Desh Ka Aam Nagarik Udan scheme was launched with much fanfare, including the slogan "From Hawai Chappal to Hawai Jahaz" about 5 years back. Today, only 1 out of 4 routes under the said scheme have survived after completing the government's subsidy period of 3 years, and that only 22 routes are in operation out of the 94 routes under the scheme completed 3-year tenure. Sir, there are many reasons why this scheme could not be picked up, and the government needs to address them. If the government really wishes that Hawai Chappal Wala be able to travel by flight, sir, the government has been talking to make even Hawai Chappal Wala to board on flight. But today the airfares are such that the Hawai Chappal Wala cannot even think of touching an aircraft. The airfares have been shot up by 1/4 of the prices prevail. The government has been talking about reducing the price on aviation turbine fuel, but nothing has happened so far, and instead the price of ATF has only further increased, resulting in increased airfare. Sir, the government aims to make a further 200 airports functioning by the year 2030 in many ways. It has also been reported that many airports will be established under Gati Shakti scheme. In this connection, I eagerly request the Honorable Minister to look into the issue of establishing an airport at Palakkad. I have already made a representation to this effect before him. Sir, Palakkad, which is my parliamentary constituency, is a centrally placed district in the state of Kerala and adjoining to the state of Tamil Nadu. Palakkad is the second largest industrial district in Kerala, having all types of industries including both central and state government public sector undertakings. The only IIT in the state of Kerala is at Palakkad. Palakkad is also the divisional headquarters of Southern Railway. The work on the industrial corridor between Coimbatore and Kochi via Palakkad is in progress. Palakkad is the gateway for reaching all materials to the state of
Kerala from many parts of the country. Moreover, many thousands of people from this district and its neighboring district are settled in many parts of the globe, earning precious foreign exchange for the country. The proposed Coimbatore-Kochi industrial corridor is expecting huge foreign investment. Hence, it is necessary and essential to have an airport at Palakkad to make travel from Palakkad easier. Therefore, it is requested that Palakkad may also be included the airport expansion plan of the government. Sir, another important thing which is I would like to mention over here is about the shortage of air traffic controllers. The sanctioned strength of air traffic controllers in the country is 3,901, against which only 3,162 personnel are employed, a shortage of 19%. This gap is only getting wider day by day. Thus, air traffic controllers are working without a mandatory break even in busiest airports. Sir, in some airports they are made to work without a day off. I conclude, sir. The demand for air traffic controllers is increasing with the addition of new airports and the introduction of new airlines. Therefore, the government needs to fill up the vacancies of air traffic controllers urgently, as they are the one who control the air traffic, and any negligence of it will invite a tragedy. Sir, thank you. Okay. Honorable Member Shri Gopal Shetty ji. Honorable Member Shri Gopal Shetty ji. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का अभिनंदन करता हूं। बहुत ही अच्छा बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें बहुत सारे सुविधाओं का व्यवस्था किया गया है। सभापति महोदय जी, गत 8 साल में जो सिविल एविएशन में बदलाव देखने के लिए मिल रहा है, कोई भी ऑफिसर के पास हम जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, रिस्पांस अच्छा मिलता है, जो भी काम हम लोग बताते हो तुरंत हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इस प्रकार के बड़े बड़े मुद्दे बाकी है, जिसमें पैसे लगने वाले नहीं है, लेकिन खाली एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होगा तो बड़े पैमाने पर लोगों को राहत मिलेगी। इस प्रकार की कुछ मुद्दे मैं छोटे छोटे रखना चाहूंगा। हमारे मुंबई शहर का, और मैं मानता हूं कि पूरे देश भर में आने वाले दिनों में यह समस्या निर्माण होने वाली है। मुंबई सबसे आगे है, क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पर बन रहे हैं। और मंत्री महोदय, जूना हमारा जो सिग्नलिंग सिस्टम है, वो सिग्नलिंग सिस्टम अभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने की वजह से उनको प्रॉब्लम आ रहा है, तो उनको शिफ्ट करने का बहुत दिनों से एक काम हाथ में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने लिया है। फाली कमेटी का इसमें नियुक्ति की गई और फाली कमेटी ने रेकमेंड किया कि ये सारे जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसको सिटी के बाहर ले जाना चाहिए, और जब तक इसको हम बाहर ले नहीं जाते तब तक कोई हाई राइज बिल्डिंग में इसको शिफ्ट करना चाहिए। ये बात उन्होंने कमेटी में कही है। ये मुझे तब पता चला जब मैं सेक्रेटरी सिविल एविएशन के पास गया, तो उन्होंने मुझे एक नोट पहले ही बनाकर रखा था और उन्होंने मुझे दिया। तो मैं एक लेमैन के मुताबिक मैं जब सोच रहा था कि पहले बिल्डिंग छोटी थी तो सिग्नलिंग अच्छा हो रहा था, अभी बिल्डिंग बड़ी हो गई मल्टी स्टोरी, तो सिग्नलिंग का उनको प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने उनको कहा कि ये सिग्नलिंग के सिस्टम, कोई बिल्डिंग जितना ऊपर जाता है उतना 30-40 मरले के ऊपर अगर हम लिफ्ट करते हैं तो विदाउट एनी कॉस्ट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ऑफिसर लोग मानते हैं, लेकिन डिसीजन कोई लेते नहीं है। मैं सम्मान्य ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को एक लेटर लिखा है, पत्र लिखा है, एक ज्वाइंट मीटिंग लेकर मुंबई के कमिश्नर और बाकी संबंधित लोगों को अगर बुलाते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुंबई का सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो एक बहुत बड़ी समस्या निर्माण होने वाली है, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका ने इन दिनों में 16,000 करोड़, सभापति महोदय जी, 16,000 करोड़ प्रीमियम में कंसेशन देकर सारे जो डेवलपर्स है उनके पास से कॉर्पोरेशन ने अपने पास में ले लिया है। और उसके बाद में हाइट रिस्ट्रिक्शन का प्रॉब्लम आ गया। अब सारे लोग पैसे भर रहे हैं, लोगों के बिल्डिंग टूट गए हैं, लेकिन हाइट का अगर क्लियरेंस जल्दी मिलता नहीं है तो बड़ा एक प्रॉब्लम मुंबई शहर के लिए खड़ा हो सकता है। हमारे सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि 474 करोड़ रुपीज आप भरिए, ताकि गोरई में एक स्टेट गवर्नमेंट का प्लॉट है, वहां पर यह सारा सिस्टम को हम शिफ्ट करेंगे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसरों के बीच में यह जल्दी फैसला होता नहीं है और ये मैटर पेंडिंग है।
गए। तो मैं चाहूंगा कि इसको आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करें तो एक बहुत बड़ा अच्छा काम मुंबई शहर के लिए हो जाएगा, न तो एक बहुत बड़ी समस्या निर्माण होने वाली है। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा और सिविल एविएशन मिनिस्टर को भी। एयर इंडिया का मर्ज हमने कर लिया, टाटा को दे दिया। टाटा ने पहले मांगा था लेकिन उन दिनों के सरकारों ने टाटा को दिया नहीं और लाखों करोड़ रुपए का घाटा हमने अपने माथे ऊपर ले लिया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने तुरंत इसके बारे में निर्णय ले लिया। टाटा को जब ये एयरलाइन हमें एयर इंडिया दे नहीं रहे तो टाटा सिंगापुर जाकर वहां पर उनके साथ में टाई अप करके उन्होंने विस्तारा को यहां पर लाया और विस्तारा कितना अच्छा एस्टेब्लिशमेंट हो गया, सारे लोग विस्तारा में जाने लग गए और उसके बाद में अभी हमने एयर इंडिया भी उनको दिया है और बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। पहले एयर इंडिया में कोई जाने के लिए तैयार नहीं था लेकिन अभी सब लोग एयर इंडिया चॉइस कर रहे हैं क्योंकि बहुत सुधारा उसमें हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि ये जो सिग्नलिंग के सिस्टम के बारे में भी अगर टाटा को ये जवाबदारी दी तो अपने पैसे से ही करेंगे, क्योंकि टाटा के बारे में मैंने सुना है कि 30%, 33% इनकम टैक्स भरते हैं और बचे हुए पैसे में भी 60% वो डोनेट करते हैं। सो ही सर्विंग द नेशन। तो उनको अगर ये इस प्रकार के हम काम देते तो ये ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में से ये सारा निकल जाता तो तुरंत वो निर्णय लेकर फटाफट ये सारा काम कर सकते हैं। तो इसके बारे में मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि देखिए आप इसमें क्या कैसे हो सकता है करके, और इसके बारे में जल्दी से हमने कोई नया काम करना चाहिए। एक छोटा मुद्दा, 2 मुद्दे लेना चाहूंगा। जो ऑफिसर लोग विद इन 2 मिनट्स जो कर्मचारी है एयरपोर्ट में जो टेम्पररी बेस पे रखे हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं, बड़े पैमाने पे पैसे लेते हैं, उनको बहुत कम सैलरी देते हैं। हमने एक बिल भी यहाँ पर लास्ट ईयर पास किया था लेकिन वो उसके बावजूद भी न्याय 100% नहीं मिल रहा है। मैं मानता हूं कि हम लोगों ने बिल पास करने के बाद में संबंधित डिपार्टमेंट के जो मंत्री होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो इम्प्लीमेंट हुआ है, कितना हुआ है, कैसे हुआ है, उसके बारे में भी एक चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम बनाना चाहिए ताकि ये पार्लियामेंट में जो भी हम बिल बनाते हैं उसका लोगों को फायदा मिलेगा। थैंक यू सर 1 मिनट प्लीज कंक्लूड। हमारे मुंबई शहर में एक जू में एक एयरपोर्ट है जो अभी यूज नहीं हो रहा है। ये छोटे छोटे जो उड़ान जैसे जो डोमेस्टिक एयरलाइंस प्रधानमंत्री ने शुरू किया है, वो अगर वहां पर हम चालू करते तो बड़ा एयरपोर्ट में जो मुंबई शहर में बहुत बड़ा लोड आता है तो उसमें से एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है। इसके बारे में भी मंत्री महोदय जी सोचना चाहिए। एक छोटा मुद्दा और है, जब हम मुंबई में एयरपोर्ट लैंड होने के बाद में बाहर निकलने के लिए आधा घंटा लगते हैं, कभी कभी लॉस्ट स्टॉप पे प्लेन लैंड होता है तो वहां पर से सीनियर सिटीजन लोगों को 2 किलोमीटर चल के आने के लिए बहुत तकलीफ होती है। तो जो बग्गी है उसकी व्यवस्था हम अगर करते हैं तो सीनियर सिटीजन लोगों को एक बहुत न्याय मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, उनके बारे में भी कोई सोचने वाला है ऐसा उनको लगेगा। तो इसके बारे में भी मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा। नवी मुंबई का एयरपोर्ट वार फुटिंग में काम को उसको आगे बढ़ाकर जितना जल्दी हो सके उतना हमने चालू करना चाहे ताकि मुंबई शहर का लोड कम हो और नवी मुंबई में ये एयरपोर्ट चालू होने से एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे ये सिस्टम में आएगा। तो इसके बारे में भी मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा तो इसके ऊपर ध्यान दें। और खास करके जो मुंबई का जो हाइट का जो सिग्नलिंग की वजह से प्रॉब्लम हुआ है, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा वो अपनी टिप्पणी करे या तो फिर जो भी उसका डिटेल लेकर एक ज्वाइंट मीटिंग लगाकर मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर को बुलाकर सारा खर्चा उनके ऊपर डाल दीजिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे हैव कलेक्टेड 16,000 crore rupees from the developers in the Mumbai city, so they can easily spend 500 crore to solve this problem. So I ask the minister to have a joint meeting immediately before the end of this session, so the people of Mumbai will get a big relief. Thank you, sir. Thank you, Honorable Member Shri Girish Kumar. सभापति महोदय, आपने मुझे नागर विमानन मंत्रालय के नियंत्रण ऋण अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं संसदीय क्षेत्र नगीना जनपद बिजनौर से आता हूं। मेरी लोकसभा नगीना से सटे विश्व प्रसिद्ध जनपद मुरादाबाद जो पीतल व ब्रास सजावटी व बर्तन बनाने के लिए जाना जाता है। यहाँ के उत्पाद न केवल अपने देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी खास धमक रखने का काम करते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान वर्ष 2017 में प्रायोजित योजना उड़ान शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य पूरे देश का आम नागरिक रहा है, जिसका मकसद रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और आम नागरिक तक हवाई सेवा मुहैया कराना है। जनपद मुरादाबाद के ग्राम बदासना ब्लॉक मोडापानी में एक हवाई पट्टी का निर्माण 2007 से ही तैयार हो गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों, तीर्थ स्थलों व पर्यटन स्थलों के लिए जिस प्रकार सरकार ने बढ़ चढ़कर उड़ान योजना के तहत कनेक्टिविटी को बनाया, लेकिन मुरादाबाद इससे अछूता रहा है। पिछले वर्ष 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, उसमें भी रीजनल कनेक्टिविटी योजना के अंतर्गत अन्य शहरों, अन्य नगरों सहित मुरादाबाद का नाम को भी संबोधित
किया गया था। अतः आपके माध्यम से अनुरोध है कि उड़ान योजना के अंतर्गत यथाशीघ्र मुरादाबाद से भी हवाई सेवाएं शुरू की जाएं, जिससे न केवल इस क्षेत्र का आर्थिक विकास बल्कि रोजगार के भी अन्य क्षेत्रों में अधिक से अधिक अवसर बन सकेंगे। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं भी पायलट ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। मुरादाबाद इसके लिए एक उचित केंद्र भी हो सकता है। अर्थात माननीय मंत्री जी से मेरी मांग है कि मुरादाबाद को उड़ान योजना के तहत जोड़ते हुए एक पायलट ट्रेनिंग सेंटर भी विकसित किया जाए, जिससे मेरी नगीना लोकसभा व अन्य जनपदों के छात्रों को पायलट ट्रेनिंग का भी अवसर मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री केशनेरी श्रीनिवास जी। Thank you, sir. Thank you for giving me the opportunity. Firstly, I appreciate the efforts of our Honorable Minister Sindhya ji for Operation Ganga. Evacuating nearly 18,000 students from Ukraine is a great move, sir. It is very strongly supported across the country and globally also. Out of that 18,000 students, nearly 2,000 students belong to Andhra, sir. We thank him for that, sir. We thank the Prime Minister and also the Civil Aviation Minister and also the Defence Minister, because many students were evacuated through defence aircrafts also, the Air Force, Indian Air Force aircrafts. So, and also, the one more initiative, sir, recently, the disinvestment of Air India, which is a very good move, sir, because Air India once was the pride of this country, but slowly that pride has been sheening and it has been deteriorating. So, and even daily losing 20 crore rupees, the hard-earned taxpayers' money, and now putting it in a safe hands, Tata's. So I think again the Air India pride will now be strengthened and it will be very high now. Also, sir, coming to the budget allocated to the Civil Aviation Ministry, it is just 10,000 crores, sir. Very little, because civil aviation sector is the growing sector in this world, and it is the priority sector, sir. And out of this 10,000 crores, almost like 8,000 crores odd is going to Air India's expenses, and only just 1,400 crores is left over for the rest of the expenses. Out of that, how will the ministry be able to improve the infrastructure and new airports in this country? That is our question, sir. And also, the Udan scheme, sir. The Udan scheme is such a good scheme, which is connecting B-tier, 2-tier, 3-tier cities of this country, and even helping the common man to fly in the aircraft, sir, and travel in the aircraft, sir. So, for this scheme, the allocated funds are only 600 crores, sir, which is very little. So, I think more funds should be allocated to the Udan scheme, more funds should be allocated for the improving of the infrastructure of the present airports, and should build new airports in all the Tier 2 and Tier 3 cities is required, sir. So, more funds should be allocated for the Civil Aviation Ministry, sir. And, sir, coming to Andhra Pradesh. Sir, Andhra Pradesh has 5 operational airports at present after the bifurcation of the state, sir. So, out of these 5, 3 are the international airports, sir. Tirupati, Vijayawada and Visakhapatnam, Kadapa and the Rajahmundry are the domestic airports, sir. Sir, Visakhapatnam airport is now operating in a naval base, sir. So, from last 10-15 years, it is becoming very congested, and also the facilities are very low, and it is also difficult for naval operations, sir. So, previously, before 2014, it was no night landing for the civil operations, commercial operations was allowed in Visakhapatnam airport. So then the Chief Minister Chandrababu Naidu has thought of building a new airport in Bhogapuram. 2 points, sir, I'll conclude. Please. Important points for the state, sir. Yeah, please. So, Bhogapuram airport, sir. So, nearly 2,700 acres of land has been acquired. Only 35 acres of land should be handed over still, sir. And the previous, our Ashoka Ippadaraju Garu, who was the Civil Aviation Minister that time, and Chandrababu Naidu Garu allotted that land, and also the NOCs were taken for the land to be handed over to the Airport Authority of India, and after that, concessionary GMR was given the airport contract, sir. But until today,
the airport construction has not been started because the NOC has not been renewed after this delay, sir. So I request the minister to give immediate NOC for the Bhogapuram airport and my constituency Vijayawada, sir, and this is the last point. Sir, Vijayawada airport, it was an airport built by Britishers in the World War II, sir. So, before 2014, it was like a small bus stand, no facilities at all. After that, with the initiative of Chandrababu Naidu garu, our then Chief Minister, our party leader, and our Civil Aviation Minister, Ashok garu, we handed over 700 acres of land taken from the farmers to the airport. Previously, it was 550 acres, sir. Now it became 450 acres. But after the change of government, sir, the farmers this land was taken in the Land Pooling Act, sir, and an annuity should be paid for them as per the agreement. The present government is not able to pay the annuity, and also because a lot of cases are happening because of the land pool, the land is not allocated to them for the farmers in the land pooling. There are a lot of civil cases and High Court stays, sir. I request the Honorable Minister to take initiative to clear all these cases, to use his use his good offices to request the state government in clearing the land issues, handing over the total land to the airport and making the facilities. Even though it is an international airport, now it is not even having customs and immigration facilities, sir. So I request the minister to immediately hand over the total land to the airport and also facilities like immigration and also food processing facilities, which because that's an agri-rich zone, food processing facilities we are requesting Honorable members, that should be immediately done. Thank you. Okay. First and foremost, I would like to congratulate our Honorable Prime Minister and a respected Civil Aviation Minister for successfully bringing back all the students from Ukraine. It's a great job done by the government of India. I'm here to, I have an issue which has been pending for a very long time. So I would like to draw the attention of our respected Civil Aviation Minister towards undue delay in setting up and making Greenfield Air Freight Station operational. For easing the process and bringing efficiency in the air cargo industry, the Air Freight Station policy was introduced by Government of India on October 28, 2014. The objective of setting up Air Freight Station was to strengthen air cargo logistic infrastructure in the country and creating an enabling environment for promoting international air cargo operations by reaching out to hinterland regions of the country besides decongesting the congested air cargo terminals. Air freight stations were supposed to be an extension of the airport or of all terminal facilities where all import facilities should be completed without hassles for cargo transport. But unfortunately, no air freight station is operational in the country till date, except the one in Chennai, which was established before the policy introduced in 2014. Indian air cargo sector throws innumerable opportunities and may well play a significant role in Make in India mission and also making India a 5 trillion economy. However, for ensuring smooth flow of air cargo and full growth of country's air cargo sector, it is critical to strengthening the value proposition of air cargo and driving efficiency through global standards, where Greenfield air freight stations can be the game changer. Any further delay in resolving the issue of setting up and making Greenfield air freight stations operational would be disastrous